Or obviously, after every deployment, you can review logs and you can then enhance your data pipeline as well. So this is one example of our complex pipelines. We have different tabs and boxes where 8 to 10 tab developers are working, and we push our code to the master. So this is one of our complex uh, pipeline, and we are managing it through follow. So how we achieve this in SSD? Sign off each and every user stories, and we only push those codes that are already have a peer review from the developers and the architects to sign off those. We don't allow anyone to make any changes into QA, UAT, or production directly. So we have restricted our developers there. So properly from their test development process. Or before pushing any codes to production, we have some QA checks. So that do any sort of compliance and programmatically detect any issues in your codes. So, and essential commit practices what we follow. Sorry, थोड़ा सा उसके लिए explaining हो रहा था, तो इस आपको थोड़ा सा repeat करने में मुश्किल होगा. So we collaborate with teams. We sit together and we track all these releases and deploy the code. The different team members are there: QA, testers, UAT guys, admins, developers, and release services team. So we and deploy usually practices in other data and DevOps. So उसके बगैर it's not possible. If you are pushing codes into the production in a small step, it will keep covered, focus, avoid sensitive data, and handle dependency properly. Validate metadata, ensure our 80% code coverage. Okay? So these are the different steps we post. We don't push any code to production who don't code coverage. Or peer review, already I said that peer review without the tools and peer review we don't push any code to production. So this is how we achieve. What SMT is using, we are using for as a DevOps tool. So उसमें फायदा क्या है? Version control and metadata deployment is easy. We can track changes. We revert as if there are any given bugs in previous solution. It is already created and Azure DevOps as our kit. Automation of testing and deployment is still in progress. Trying to achieve it through follow loading testing. There is one feature from Border, and Border makes us back motion easy for us because we have tons of tests and boxes. So back motion is very easy in Border. So we are also trying to automate our back motion process using CIT. So especially for the manual steps. If there are any 3 or 4 steps, so provide us the power to record those steps, and then we push those CIT scripts and boxes, so it will make life easy for the admin. So they don't have to provide update those pre and post deployment steps individually on the boxes. We just run the code on the test boxes and we automatically make changes. What we have recorded in one of them. So this is still coming, still the phase of still doing. 2024 in due course, Borrow launches a new DevOps AI agent, and there are plan agents, build agent, test agent, release agent, and operating. Can you hear me? Currently, as a DevOps engineer, I'm using the release agent and operating agent to go with all the errors that we are getting. Okay. This is I'm very sorry for this because I'm on work. My work is very hard today.
put in less details your speaker will be due to presentation the for release agent. people's. If everyone gets I'm the operating this laptop for yeah, and if the you speaker of the he team. or she can go to the log section. So they due to our release agent, वो Okay. आपका ये इशू की एक जनरल आइडिया दे देते हैं and कुछ recommended solutions भी आपको बताते हैं कि how you can Please fix give this that for error. like. ठीक है? तो जब से ये release agent हमने इनपुट किया थी बॉडी की पाइपलाइन में उसका हमारे पास टिकट्स जो वो केसेस वो करवाना शुरू हुआ क्योंकि नाउ डेवलपर्स और एडमिन who have taken an idea from the Komodo, what we missed. And how much today? And the other thing is, if you can type any test case, yeah, it can generate a code for you. So this is the test data that is working behind it, and we will use using it. Hopefully, soon we will take it for all of our Salesforce team. okay, you go for Boston. Data streaming we are using for. What is the word for we just Boston? integrated it with our pipeline. Basically, the security is using it for quite some time. So it helps you simplify data creation. Last time, one people from Boston only brought. Because You know? this is an awful tool, and I like it for this point number 2 because doing manually it will take more time, but probably there are predefined data sets already available, and you have to just tweak it according to your needs, and you can do mass data seeding efficiently. Before joining SMP or what I discussed at with Tyler, so these are so these were the first three were the issue we were facing when without the loss what type of issues we were Thank you facing so much for in Salesforce. So managing the flex data, with volume data migration and continuous delivery challenges. These were the main three challenges we were facing before DevOps. So after implementing the DevOps solutions like Automated and now Komodo, so what we did by integrating models, we make a 70% which is more efficient. you have been, And sandbox is very easy for us now. your relation, your relative in Boston or a friend? We achieved 70% reduction in deployment time and all efficiencies. So it helped us in by adopting DevOps, we achieved 70% less reduction. And enhanced collaboration and minimize Because I'm on work, it's very busy today. I'm really sorry. Things we achieved by introducing DevOps in our processes. So, conclusion, empowering Salesforce professionals to adopt DevOps will improve productivity, efficiency, and rapidity in their organization. So these are the few DevOps specific tools of Salesforce. There are many others like Circle CI, but those are not DevOps specific, and we have you can do I'm really manual sorry. interventions there and create another processes and everything else. Thank you again, Moment in that Laksh and Ticket for all the support. Any questions?
So the main practices we follow is same. जो pipeline का जो भी models हैं हम लोग follow कर रहे हैं. So it's basically because we are using it for Salesforce, it doesn't mean that we have a very diverse DevOps teams available in S&P Global for different technologies, and we have different teams available. And there is one centralized team DevOps teams available in S&P Global, which is utilizing even these. We are I was part of the SL Venture team where we created a pipeline, a gate pipeline from there, and we were using the Terraform to push our codes of SQL Server. So SQL management releases using a gate pipeline and Terraform. We push our code in a Docker container environment, and we have this diversity. So, but in as Poly is a very low code, no code software, and it provides you a leverage that you can build your pipelines using already available data set. So, and Poly is actually a DevOps, sorry, Salesforce native, Qualcomm Salesforce native solution. So, I hope. For the security above the code coverage and for number of specific. But and then the one is, are you getting a for trunk-based requirements or the generic get flow process basically as a best practice, industry best practice, or you have your best practices? In Salesforce, for this Salesforce, for the department I'm providing, we are using just flow versions, and we have inbuilt compliance and code coverage mechanisms available inside the product. For all the organizations, yes, we are using SonarQube, we are using Terraform, we are using Docker, we are using different technologies for creating and managing our compliance tools and fixing minimal conflicts. So yeah. The question is about your review process, peer review. What's your process is, how long it takes, and who can peer review? In our department, the lead is they actually take peer review all the code related changes before pushing anything into the QA environment. There is a peer review task, and we integrated that as well in QA. So if they get a they push it, and after that the code gets into the QA through our applications. So in our specific SNP level, details are very possible. So, how do you communicate the people who are peer reviewed? Do you have to explain to them, do you use any communication channels? Yes, these are using their own communication channels, and through the compliance rules that we have enabled in this model. So compliance rules, after the peer review from the lead when the code runs into model in our pipeline. So there are some additional steps on our side as a research. We have some PhD rules already integrated, and every few months Salesforce publish those PhD rules as well with the critical or with their issues banking. So we implemented those as well. So before when our code runs in model, it already checks the CCH rules, PMD rules. After those are passed, and if we face any or the process phase, we reach out to the developer team that this code is failing, and you have to rectify those changes. So compliance rules and PMD rules, it is also integrated in our DLP pipelines. Alright, I'm sorry, I have to cut it off.
Women will be here all day, so you can ask. I'm going to wrap up and the next time is almost there. Thank you. Who is on here? Today, guys, lunch is available at the cafe and the restaurant. Good job. Sorry sir. Assalamualaikum. Umar bhai मैं आ गया क्या हो चलाओ पीपीटी नहीं है मुझे आपका लैपटॉप यहाँ पर होगा तो मैं रन यहाँ से तो एप्लीकेशन रन करना होगा तो पीपीटी को लोगे वो तो सर थोड़ा फिर बात करें मैंने थोड़ा सी बात तक पहले आप यहीं पे ना जी मैं सामान किसी को देना नहीं सेशन बस यहाँ से बस सही नीचे रख दे जैसे करने का पीछे से किससे फिर सर आपको लैपटॉप से आगे पहले जो इस पहले डेमो था ना आया था उन्होंने इधर ही डेमो किया डेमो है ठीक है तो मैं रन तो कर दूँ जी आपको माइक और एक हाथ से माइक को एक हाथ से जी यहाँ से अच्छा क्या नहीं बैठने का इश्यू से चेंज हो जाएगी मिल जाएगी बस ये ज़्यादा हम टेस्ट कर सकते हैं जी ज़रूर खाना आप खाना जा रहे हैं उसके बाद सर ये पहले टेस्टिंग उसके बाद खाना आ जाए सर ये आपको मैं ओके लाइव पे आ गए यूट्यूब इधर बैठे थोड़ी तो मैं नहीं कहेंगे यार चैनल पे कौन आ गया लेकिन वो भी आगे बेटा आप खाना रख सकेंगे मैं कुछ सॉरी बेटा नहीं सर की तरफ देखेंगे हाँ बिल्कुल देखने की तो इससे जरूरत नहीं है और मैं अपनी बात और क्या आपको लाइव अब हम ऐसे भी अगर हमारे पास इशू आया तो वी कैन रिलीज एनी टाइम द हाई वॉट अगर एक इवन इशू हिट हुआ है प्रोडक्शन में तो डेवलपमेंट की कैन इजीली फिक्स हो जाए विद इन 1 आवर वी कैन वो ऑलरेडी डिपेंड क्योंकि प्रोसेस ऑलरेडी डिफाइंड है प्लान ऑलरेडी डिफाइंड है जस्ट आपको उसका फिक्सर अगर पता चल गया तो आप उसको रिलीज कर सकते हैं पावर कौन सा कनेक्ट करें यहाँ पे ये ना ये पास अच्छा आप 6 फीट अवेलेबल है ठीक है वो भी आप उसको यूज करके अपनी चेक करना एक्चुअली मसला जब आता है ऑब्वियसली नॉट मल्टीपल चेंजेस हैं तो अब ये बहुत ज़्यादा माइंड डाइवर्स तो आप मसला तो सिंगल कॉमेंट अगर आप लीड के बताते हैं तो आपकी टीम लीड पे जाना चाहिए वी विल नॉट फेस क्योंकि अगर चेंज का वो राइट हुए ना तो आपकी टीम नहीं की बट अगर कॉमन कॉम्पोनेंट तो आप भी यूज करेंगे मसला
फिर unconfig it's not easy to fix. तो राइट नाउ कोई प्रॉब्लम जो चेन सेट्स हैं कोई यूज कर रहे हैं उसको तो डेवऑप्स का मतलब ये है कि एक प्रोसेस बन जाता है और उसमें हम बता देते हैं कि ये वो थोड़ा माइक बंद करके दे दें ताकि मैं इसको चेक करूँ कि मेरे हाथ से चलता है। ठीक है, आपकी पीटी जब स्टार्ट करेंगे वहीं से स्टार्ट करवा दूँगा, फिर उसके बाद जब डेमो होगा फिर आप मेरी तो पीछे पीछे है ये डेमो है जब तो ऑलरेडी हमारे पास पीपीटी है। मैं दिखाऊँ आपको। ये पाकिस्तान ड्रीम है, ये उमर सलाउद्दीन सर आपका नाम? नहीं उमर सलाउद्दीन नहीं, शेख मोहम्मद सलाउद्दीन। अच्छा शेख उमर सलाउद्दीन, ये भी कोई और है शायद। जी नहीं, ये उमर सलाउद्दीन कोई और है। अच्छा ये कोई और है, मुझे लगा शायद हाँ नहीं नहीं बेटा मेरा इट्स ओके, फिर आपका यही करना। कोई वीडियो तो नहीं सर आपकी, मैं कोशिश करता हूँ वहाँ पे आपको लैपटॉप दे दूँ। नहीं ये जिससे इस चीज को किया उसने ये आपको पावर ऑफ इसके बाद आपने में आप it was not that back not and all but डबल HDMI है ना नीचे जो एक वाला बटन दबा दिया और वो एक साइड से खाली प्रेजेंटेशन उधर जा रही है पूरे प्रेजेंटेशन में वैसे ही ये जो मैसेज है मेरा स्केल करें वो भी ना हो उधर गया नीचे प्रेजेंटेशन का तो वो सॉरी से जा सकते बार बार करके ना ठीक है पेशावर में 4 बंदे दो बंदे उस दिन का आज रात का भी ऐसा आज कोच की पेपर एक हमारा स्टॉल से हमने जाना स्टॉल भी अपनी 27 से होता है। आज लेकिन जायद जा रहा है हम लोग के लिए मैं एक
UAT फ्रॉड हो जाता है। वो मैंने उसमें जुगाड़ लगाया ना, वो तो फ्रॉड हो जाएगा, पता चलेगा। कन्वर्सेशन है ना, वो सही ना होता वो पता है, वो पता है, वो सारे मुझे कहते हैं मैं एवरीथिंग लुक ये वाली लगा दें। ग्रेट बेटा, दैट्स इट। ठीक, मैंने चेक कर लिया। आपको जब होगा तो आके अटैच करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर हमारे पास सेट के अवेलेबल है तो फिर सर परमिशन फिर आपको ये नहीं लगाना पड़ता है समझना। जी ठीक है, सही। या तो ये भी हो सकता है आप करके खड़े रहिए, क्योंकि वो मूव होता रहेगा ना, तो आवाज़ में नोट करना कि जब वो माइक मूव हो रहा है तो आवाज़ आती नहीं है पीछे। माइक मैंने खोला नहीं जी, खोला नहीं था माइक। नहीं नहीं नहीं, वैसे जो जी जी, वो थोड़ा सा देर दूर होता है करते हैं ना, ना। तो थोड़ा सा होता है तो वो वाला माइक रखूंगा, वो वाला माइक ठीक है। अच्छा, वो यहाँ पे रखूंगा कॉर्नर पे। ये इधर से स्टेज पे नहीं जाएंगे, स्टेज पे नहीं जाएंगे। अभी क्या सीन है? हम वेट कर रहे हैं आप ना। हाँ, आप लोग पूरा सेट है। नहीं कोई आप लोग मेरा ख्याल है 40 सर लेकिन बस 40। मैं देख रहा था कि क्या है डेमो जैम के लिए, क्योंकि वो स्टेज पर तो नहीं होगी, वो यहाँ से होगी। हमारा तो पता नहीं चला और खड़ा था, वही सब वो ऐसे ही आपको पता करते रहते कोई स्टेज पिक्चर बनाया, स्टेज इसके